बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज x4 minus 2x3 minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बोथ साइड डिवाइड करना है x स्क्वायर से। डिवाइडिंग both sides by x square, we get x square minus 2x minus 2 plus 2 over x and 1 over x square is equal to 0. Collecting like terms, x square plus 1 over x square minus 2x plus 2 over x minus 2 is equal to 0। x square plus 1 over x square minus 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 ओवर x बचेगा, बिकॉज जब भी हम माइनस का साइन बाहर कॉमन लेंगे अंदर का साइन ब्रैकेट का चेंज होगा। माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम इसको सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज हमारे पास ये टर्म स्क्वायर के साथ है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। स्क्वायर बोल दें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y square, and x square plus 1 over x square will be equal to y square plus 2. Now, by putting the value of x square plus 1 over x square in equation 1, we get y square plus 2 minus 2y minus 2 is equal to 0. Now plus 2 minus 2 कैंसिल हो जाएगा, y square minus 2y is equal to 0। y कॉमन ले लें, y minus 2 is equal to 0, y is equal to 0 and y minus 2 is equal to 0, y is equal to 0 and y is equal to 2. Now we have two values of y, but this is not a solution set because our question was in variable x. Now जो हमने सपोज किया था y x minus 1 over x को यहाँ पर पुट कर देते हैं। x minus 1 over x is equal to 2। x से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, x square minus 1 is equal to x into 0, 0, x square is equal to 1 and x is equal to plus minus 1। इसको भी x से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, x square minus 1 is equal to 2x, x square minus 2x इस तरफ लाने से and minus 1 is equal to 0। अगर यहाँ प्लस 1 होता डियर स्टूडेंट्स तो हम इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, बट हमारे पास है माइनस 1 है, इसके फैक्टर भी नहीं बनते। हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 1 and we have x is equal to minus b plus minus b square 4ac square root over 2a minus b plus minus b square 4a and c under root over 2a plus 2 plus minus 4 plus 4 8 square root over 2, 8 का स्क्वायर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है, 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 और
equal to x. We get solution set of this question is plus minus 1 and 1 plus minus under root 2. It was question number 9. Dear students, अब हम इसका next question करते हैं, question number 12. The question number 12 is 4 into 2 raised power 2x plus 1 minus 9 into 2 raised power x plus 1 is equal to 0. Such type of equations are called exponential equations. Now we can write it as 4 into 2 raised power 2x into 2 minus 9 into 2 raised power x plus 1 is equal to 0. 4 to the 8 into 2 raised power 2x, 9 into 2 raised power x plus 1 is equal to 0. Let 2 raised power x is equal to y, securing both sides. 2 raised power x whole square is equal to y square. This implies 2 raised power 2x is equal to y square, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. Now equation 1 becomes 8y square minus 9y plus 1 is equal to 0. इसके फैक्टर्स बनाते हैं. 8y square minus 8y minus y plus 1 is equal to 0. 8y कॉमन है यहाँ से, y minus 1 कॉमन लेंगे, y minus 1 साइन चेंज हुआ ब्रैकेट के अंदर, y minus 1 कॉमन, 8y minus 1 is equal to 0. अब हमने इनको बारी बारी equal to 0 रखना है. Then we get y is equal to 1 and 8y is equal to 1. Y is equal to 1 and y is equal to 1 over 8. We have substituted that y was equal to 2 raised power x, and there 2 raised power x is equal to 1 over 8. 8 can be written as 2 raised power 3. 2 raised power x is equal to 1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 power 0, because we know that x power 0 is equal to 1, p power 0 is equal to 1, 3 power 0 is equal to 1. बट सवाल ये है कि हमने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरफ हमारे पास बेस 2 है, तो इधर भी हमने बेस 2 की पावर को ही 0 किया. बाय कंपेयरिंग वी गेट x is equal to 0. 2 raised power x is equal to, ये ऊपर जाकर 2 की पावर -3 हो जाएगी. बाय कंपेयरिंग वी गेट x is equal to -3. The solution set of this question will be 0 and -3. Dear students, it was question number 12. Now last question of this exercise in accelerated learning program, that is question number 14. 2 raised power x plus 64 over 2 raised power x minus 20 is equal to 0. Let करते हैं 2 raised power x is equal to y. Then this equation will become y plus 64 over y minus 20 is equal to 0. By multiplying both sides by y square plus 64 minus 20y is equal to 0. ये quadratic equation है because of y square, but it is not in standard form. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. y square minus 20y plus 64, इसकी टर्म्स को अरेंज किया है, इसके फैक्टर बनाते हैं, तो y square minus 16y minus 4y minus 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनता है, प्लस 64 इज इक्वल टू 0. y कॉमन लेते हैं, y minus 16 minus 4 कॉमन लिया, y minus 16 कॉमन,
y minus 4 is equal to 0, y minus 16 is equal to 0, and y minus 4 is equal to 0. By solving we get y is equal to 16 and y is equal to 4. But this is not the solution because our question was in variable x. No, we have y is equal to 16 and y is equal to 4. We have supposed that y was equal to 2 raised power x. 2 raised power x. 16 can be written as 2 raised power 4. By comparing, we get x is equal to 4, and here 4 can be written as 2 raised power 2. By comparing, we get x is equal to 2. The solution set of this question is 2 and 4. Dear students, these were the 6 questions. तीन हमने लास्ट टाइम किए थे और 3 हमने इस एक्सरसाइज के आज किए हैं, और इस एक्सरसाइज 1.3 में से हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।